In the last class yesterday, I just had given you a preliminary idea of what Raman spectroscopy is, and so we will be continuing with it. Okay, हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे regarding the. So as discussed, we know the Raman effect was a historic landmark, not just for chemistry, physics, for entire science. But it is in the context of chemistry that we are discussing here, and so it becomes important that to understand the importance and the significance was is can be understood because of the American Chemical Society, the world's largest scientific society, is American Chemical Society, and that has recognized this as a historical chemical landmark. Obviously, imagine you had a large number of molecules, mm, polar, non-polar, diatomic, homonuclear, heteronuclear. So there was a large set of molecules in which vibration, rotation cannot be understood. You had no idea about how the rotation or vibration is taking place because infrared spectroscopy, microwave spectroscopy were not able to give you any information regarding that. Oxygen, O2, H2, ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल थे इस पे there is no dipole, since there is no change in dipole moment during vibration, there is no permanent dipole moment, neither rotational spectroscopy, microwave in the conventional way, neither nor that thing the infrared spectroscopy can be carried out. So उसमें आपको कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था about the molecular vibration rotation taking place, and that is important. जब भी आप कुछ भी plan करते हो, you plan a reaction or anything, these vibrations are very important from planning a reaction or कुछ भी आप करते हो. So this is so important. It's not just that you get the energy level diagram and things like that. You also have involvement of those vibrational levels. Somehow they are also related to the speed of reaction, the rate of reaction, they affect many chemical dynamics. So that's why it is said to be a chemical landmark. Okay, and you know the place where this was discovered was called the Indian Association for the Cultivation of Science, and this is the first spectrometer which Professor C.V. Raman made by himself. So this and this is the first Raman spectrum photographed in 1928. Okay, so it was based on scattering of light, and the common thing which was well known till that time was the Rayleigh scattering, one of the types of scattering. और 1928 में एकमात्र वही एक स्कैटरिंग थी जो जानी जाती थी, that is goes by the name of Rayleigh scattering, and this was the first time first time which Raman reported a new kind of scattering. And as I told you yesterday also, um, Raman used the sunlight, condensed it, developed it as through a series of mirrors and lenses. He concentrated all the light of sun coming from sun, made it into a very very intense light source, and that light source was used for this kind of thing. So these were the words of C.V. Raman. So initially what he talked about, that was emission. He was talking about there is emission of light from the atoms and molecules, and which is of very different kind. So that's uh, his words when he first addressed the Science Association in Bangalore, South Indian Science Association. Okay, so these were the prophetic words which he spoken about. So what we now know, that sunlight
is composed of seven different. You have these colors that when you pass through a prism, it splits up into these many colors from violet to red. And what Raman did, he applied. So suppose there is white light from sunlight, सूरज से आपको रोशनी आ रही है, इसको आपने violet filter से पास किया, only the violet is allowed to pass through, and then this thing, when when this light is allowed to pass through, it falls, it is made incident upon this liquid sample that was placed. Initially, the first spectrum that was taken was for benzene. So suppose there is benzene kept over there. This drop is from the liquid benzene. The violet light falls in this, and it gets scattered in all the direction. Rayleigh scattering. So उसी frequency पे different directions में उसकी scattering होती है. But what Raman observed, there was a very very small fraction जिसमें कि frequency change हो जा रही है. There is change in frequency, so you can see it is now the green light is observed, which is of lower intensity, much lower intensity, very very weak. This is very intense in the scattered light, but this fraction was very very small. To observe this, he applied a filter, green filter, which blocked all the violet and allowed only green to pass. So this so actually you understand, scattering happens in all directions. Scattering का कोई limited direction नहीं, वो हर direction में होगा. लेकिन the source of light and the observer, the sample, आपके लिए geometry क्या important हो जाता है? The source of light, uh, this is your source of light, and that one, okay, okay. So the source of light is important. Source of light, electromagnetic radiations. This is your sample, and this is the observer. So this is your geometry which becomes important. Observer is here, so you are here, and this is how. So this is how the Raman designed his setup. And I told you the ratio. This is uh, out 1 out of 10 to the power 7 photons were found to be change in color. Most of it, so out of 1 crore, let's say, only one of them had a change in color, a change in energy. Rest of the photons had the same energy as the incident photon. Violet था, violet ही scatter हो गया, most of them in that scheme. But some of the violet that was incident upon them, they had, when they were scattered, the energy was changed. It was so this was observed by Raman. And the Rayleigh scattered light, the scattering that is happening here, it is uh, of not any, it is not important. मतलब आपको इससे कोई फायदा नहीं होता. ये Rayleigh scattered light gives you no information about the molecular structure or anything or vibrations. Okay, but this small fraction of light which has change in energy, it carries a lot of information about the molecular vibration, and knowing the vibrational features, you can actually deduce the structure of the molecule. So that's why this Raman scattered light can be is very important. So that's the one thing was that is important to understand. uh, uh, why it is not important? It is not important. This is important. Why? Because it carries information about molecular vibration, and knowing the molecular vibration, you can deduce the structure of the molecule. That's why it becomes important. So a modern Raman spectrometer utilizes, now it has gone many changes, uh, the computation aspect, the algorithms have become advanced.
the lasers are used. So for intense light source, we used a coherent intense light source is used. Laser is a very common feature of all the Raman spectrometer. Nowadays, we cannot imagine Raman spectroscopy without a laser, and so that's the what mm, very surprising part of Raman's work, that without a laser he was able to obtain such spectrum of with such good resolution. And so it was very difficult to observe in those times. The technology was not so important improved that time. It was very rudimentary at that stage, but still he was able to observe record spectrum for so many sample molecules. क्या नहीं हो रहा है? स्लाइड शेयर नहीं हुआ है? ओके, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं, तो ये मॉडर्न डे सेटअप है जिसमें कि लाइट सोर्स, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जिसको हम कह रहे हैं, एक लेज़र में एक ही वेवलेंथ का होता है, लाइट रहता है, तो उसको यूज़ किया जाता है। एंड what we now understand this is that it tells you, Raman spectroscopy में दो चीज़ें, Raman it tells you about molecular vibration and also about molecular rotation. So the different types of vibrations that can happen in a molecule, symmetric stretching, you can see एक कैसे मूवमेंट हो रहा है, एसिमेट्रिक में, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक अंदर की ओर जा रहा है तो दूसरा बाहर निकल रहा है, जो ब्लू स्फीयर आप देख रहे हैं। वैगिंग में आप देख रहे हैं दोनों बाहर की ओर आ रहे हैं, दोनों ब्लू डॉट्स, ब्लू स्फीयर, they are coming out of the screen, wagging just like a dog wags its tail. और ट्विस्टिंग में आप देख रहे हैं एक बाहर आ रहा है तो दूसरा अंदर जा रहा है, बिहाइंड द स्क्रीन, फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, लाइक दैट। सो ट्विस्टिंग, सीजरिंग, ये सब different types of vibrations है which we do find in several, which is expected to happen in uh, a polyatomic molecule, right? सब तरह, बहुत तरह के variety of vibrations होंगे। तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फिर आप स्ट्रक्चर का भी पता कर लेते हैं कि ऐसी वाइब्रेशन हो रही होगी, ये सब हो रहा है इतने फ्रीक्वेंसी पे, तो ये वाला एक तो है फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिटी पता चलता है, और फिर इससे आप थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रक्चर तक आप पहुंच जाते हैं। सो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ स्कैटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रमन स्कैटरिंग होगा, उसको आप डिटेक्टर से डिटेक्ट करेंगे कितना फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है चेंजेस, और ये सारी तरह की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। रिले स्कैटरिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट because there is no change in energy, and so we do not get any information about molecular vibrations, and so we cannot understand the molecular structure by Rayleigh scattering. But Raman scattering, when we develop it as a tool, as a with a source of light and monochromatic source of light and the detector, we get a lot of information about the molecules. Okay, so this is the illustration of how the things happen, how the molecules are vibrating, and the timeline of is here. So inelastic light scattering predicted by Smickel. Then you had, the major thing is that in 1928 you had Raman and Krishnan, C.V. Raman and K.S. Krishnan, जिनको कि एक लाइट एमिशन दिखा, कुछ सॉल्वेंट्स उन्होंने ट्राई किया सनलाइट का, जैसे हमने आपको अपरेटस दिखाया सेटअप में, एंड दे फाउंड कि एक 90 डिग्री एंगल पे जब वो फिल्टर लगा के चेक कर रहे हैं तो इंसिडेंट लाइट का जो कलर है उससे चेंज कलर कुछ मिल रहा है। सो दैट दे, उस समय में उन्होंने जो कहा वर्ड यूज किया, दैट वाज फ्लोरेसेंस, फीबल फ्लोरेसेंस, वेरी वेरी वीक काइंड ऑफ। फीबल का मतलब होता है बहुत ही कम इंटेंसिटी का, बहुत थोड़ा सा, जो very very weak. Feeble means, this word means very weak.
less intense, very very less intense, very very, है ना, very very less intense. So ऐसा कुछ मिल रहा था, and then in 2 years later he gets the prize, Nobel Prize in Physics. So although it was Nobel Prize in Physics, now we know that it is so important for chemistry, it is also important for biology. आजकल आपको पता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको कोविड डिटेक्शन की भी बात की जा रही है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से फॉरेंसिक साइंस में भी काफ़ी हेल्प मिल रही, जो क्या कहते हैं कि फॉर्जरी हुई है, पेन से लिखा गया है, वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। सो इट हैज़ बीन, मतलब उस समय ये सब सोचा भी नहीं गया होगा कि इतना बड़ी चीज़ है कि ये डिस्कवरी जो हुई। ठीक है। सो इट इज़ नाउ encompasses all walks of life। आप कहीं पे भी जाएं इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है। सो फ्रॉम डिटेक्शन ऑफ अ पैथोजन टू डिटेक्शन proving a case of forgery or something, everywhere Raman spectroscopy can is now being used to to provide a scientific evidence for anything like that। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये टाइमलाइन इन्वेंशन है, और मेजर टाइमलाइन ये भी है 1961 में इन्वेंशन ऑफ लेज़र। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना रमन एक्सपेरिमेंट बहुत ही मुश्किल था, सिर्फ रमन ही कर पा रहे थे, बाकी सब लोग उतना, इट वाज वेरी वेरी हार्ड हार्ड वर्क, मतलब बहुत सिस्टमेट, उतनी प्लानिंग के साथ वो सारा सनलाइट को कंडेंस करना, फिर उसको एक ड्रॉप ऑफ वाटर सैंपल पे डालना, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो लेज़र मेड इट इजियर, डिस्कवरी ऑफ लेज़र। और उसके बाद ये पिकअप, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सारा काम है पिकअप हुआ, काफ़ी लोग काम करने लगे। सो आई विल ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट वेरिएशन ऑफ रमन स्कैटरिंग इज ऑल्सो सरफेस एनहांस रमन स्कैटरिंग, जिसमें से कि कुछ मॉलिक्यूल्स का रमन स्कैटरिंग एनहांस हो जाता है अगर वो मेटल सरफेस पर बाइंड करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ टेक्निक विच कैन रीच सिंगल मॉलिक्यूल डिटेक्शन, एक मॉलिक्यूल को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज अल्टीमेट डिटेक्शन लिमिट, और वो इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पॉसिबल है, बाकी किसी में उतना सेंसिटिविटी नहीं है। सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि ये आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, इसका डेली लाइफ में भी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कुछ मतलब हेल्प है, डिजीज डायग्नोसिस से लेके finding a case of forgery, proving something like that. So सब कुछ important, even detection of explosives वहाँ पे भी important, सब जगह। So so पहले हमें यही कहना होता कि आपको ये समझना चाहिए कि ये चीज़ important क्यों, why we are studying this thing. So now this is the on your screen is the first spectrum taken by Raman, and this was for benzene. The scattered light was made to fall upon the photographic plate, and there was rings, bright lines observed on the photographic plate of different intensity. तो इससे फिर फर्दर वो स्पेक्ट्रम, हर एक लाइन एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ रही है, ये एक सर्टेन वेवलेंथ को करस्पॉन्ड कर रही है, एंड उसकी जो ब्राइटनेस है उसका एक आप ग्राफ बना सकते हैं कि लेस इंटेंस लाइन वाइट कलर की जो दिख रही है, मोर इंटेंस, एंड देन यू कैन प्लॉट अ ग्राफ। बट आजकल कंप्यूटर में ये अपने आप हो जाता है, आप जस्ट सैंपल डालते हैं, यू क्लिक द स्कैन बटन एंड you get the spectrum on the screen without going to have actually analyzing the photographic plate. So when we talk about the basics of this technique, at the heart of this lies this concept. So from a classical point of view, we can view it as a inelastic collision of photon with the molecule. So आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेरी इन योर अर्ली डेज इन क्लास 11 12, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इफ दिस इज अ
green sphere, it hits the surface and rebounds with the same energy to the same height. So kinetic energy is unchanged for the green sphere, green ball, then it is elastic collision. If the green sphere that we see on the screen, it strikes the surface and gets stuck over there, or it rebounds with less energy, then it is an elastic collision. If there is, so मतलब अगर वो एक सरफेस पे टकराने के बाद वापस किसी भी डायरेक्शन में जाए, एनर्जी उसकी बदल गई, तो इन इलास्टिक कोलिजन है. अगर वो सेम एनर्जी के साथ रिबाउंड करता है दूसरे किसी डायरेक्शन में, then that is elastic collision. Something like this happens with the photons also. When we visualize light as a bunch of particles, so this is something which happens to photons also. So photon में जब ये elastic collision होता है with any surface, this is example of, if it is photon, then we call it, this is example of Rayleigh scattering. And when it strikes the surface and the the photon that comes out, that rebounds, has less energy, uh, then it is inelastic collision, and we say that it is this is what you call as Raman scattering. So this is your Raman part, Raman scattering, inelastic collision. So energy can, it cannot be created, cannot be destroyed. So अगर वो energy इसकी कम हो गई तो बाकी की energy कहाँ गई? So some of the energy must have been given to the system, to the molecule जिसके साथ वो टकराया है. So that is the starting point of our investigation, that what happens in the happened to the molecule. We found that the violet light was incident upon benzene, and a green light was seen of a small fraction which has changed in color. That was Raman scattering. So basically this is what was happening. Suppose we have a laser. This is your source of laser, lambda green. It's incident upon this, and most of the light passes through, is scattered and have the same energy as that of laser. So ये लगभग 1 करोड़ photons के लिए ऐसा ही होता है. लेकिन 1 करोड़ में से एक photon ऐसा भी होगा जिसकी energy बदल जाएगी, and this is your this kind of scattering where the wavelength of light has scattered in the scattered radiation has changed. It is, if it is longer than the incident laser wavelength, तो इसकी एनर्जी चेंज हो गई है, और यही आपका रमन स्कैटरिंग. दिस इज योर रमन स्कैटरिंग, एंड दिस रमन स्कैटरिंग contains the information about the molecular vibration and rotation. So this change in color is what we call as Raman scattering. Okay, and this is 0.00001. So as I told you, 1 out of 10 to the power 7, 1 out of 10 to the power 7 will undergo this kind of thing. So it is very very difficult. सोचिए 1 करोड़ फोटोन आ रहा है जिसका कि there is no change in energies in the scattered radiation. Okay, तो वो डोमिनेट करेगा आपकी आंखों में, तो वही सब जाएगा. ये तो देखना मुश्किल है, और इसीलिए किसी ने ऑब्जर्व भी नहीं किया था. मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व that nobody before Raman could think of or observe this thing. Rayleigh scattering was the only scattering phenomena till then observed by the scientists. Okay, so the first thing is that, so you had an exciting source of radiation, a laser that we talked about, monochromatic source of light, very very intense source of light. And then what happens, it most of the light that comes out, it has the energy of photon is unchanged. It is, if blue light was used, it is the blue light that is coming out. Some of them have change in energy, and that is understood that some of the energy has, if you calculate the change in energy, that corresponds to the change in vibrational energy levels. So molecule is now in a different vibrational state. So in
different. So there is uh, vibrational excitation that has occurred in the molecule. So that Raman scattering carries that information. If you अगर आप दोनों को कैलकुलेट करें, चेंज इन एनर्जी, सो एक्साइटेशन वेवलेंथ और जो वाइब्रेशन के लिए जो चेंज इन एनर्जी है, so that corresponds to the change in frequency of the lights, scattered light. So it happens. So this is, so Raman scattering is all about inelastic collision of photons with the molecule, right? That after colliding with the molecule, its energy changes, and this happens for very small number of photons. Okay. So now what we know, that there are three types of Raman scattering that can be we can discuss: rotational Raman, vibrational Raman, and electronic Raman. First, we are talking about vibrational. That is much easier to understand, and then we will go to the rotational Raman also later on. ओके तो पहले हम लोग वाइब्रेशन को डिस्कस करेंगे, वाइब्रेशनल रामन टू बी डिस्कस्ड फर्स्ट. सो दिस इज द थिंग, यू हैव अ सोर्स ऑफ लेजर. लेजर की जो वेवलेंथ है, अगर वो ग्रीन लाइट है, उससे कम एनर्जी पे आपको कुछ सिग्नल मिलेगा, वेरी वीक. सो ये देखिए यहाँ पे जो ब्रेकेज दिया है, इसका मतलब है एक्चुअल में ये जो इंटेंसिटी है ग्रीन लाइट की इतनी ज्यादा है. सो यू आर प्लॉटिंग इंटेंसिटी on, and this is the frequency of light. So this breakage means actually, in actual sense, it is going beyond the screen. Okay, so but to show it within the screen limits, we are giving a break. ऐसे करके ग्राफ बनाया जाता है, हम लोग भी ओरिजिन में बनाते हैं. you will learn these things, that if something is very large in comparison to other, but वो small वाला चीज आपको दिखाना है, small intensity वाला, that. So Rayleigh, this is your Rayleigh scattering. This one that you are seeing is the Rayleigh scattering, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे जब आप डिटेक्टर को रख रहे हैं, तो ट्रांसमिटेड लाइट नहीं है, ये स्कैटर्ड लाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं आप. आपने देखा, हमने जो ज्योमेट्री दिखाई, source of light, sample, and the observer, it is making a 90-degree geometry. Okay, so in the 90-degree geometry, all the light that is collected at the detector is scattered light, and a major portion of that is having no change in frequency, that is shown here with the green one, and is very intense. So ये अगर 10 to the power 7 है और ये 1 है, 1 in number, 10 to the power 7 in number. So that's the big difference. ये इतना बड़ा स्केल हो जाएगा कि ऊपर स्क्रीन के बाहर बहुत ऊपर तक जाएगा. So it is shown over. So highly intense, हाई इंटेंसिटी वाला ये लाइट है, यहाँ पे दिखेगा, और ये वेरी वीक इंटेंसिटी, वेरी वीक, लेस इंटेंस अब इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे दिखेगा. सो दिस वन इज योर एक्चुअली द रमन स्कैटरिंग, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी जिसका हुआ, डिक्रीज कर गया. दिस वन इज सीन ओवर हियर. दिस इज अ स्कैटर्ड वन विच इज शोन ओवर हियर. रेले स्कैटरिंग, जिसमें कि कोई चेंज नहीं हुआ फ्रीक्वेंसी. इंसिडेंट, ये इंसिडेंट फोटोन है, दिस इज स्कैटर्ड. स्कैटरिंग सारे हर एक डायरेक्शन में होगी, कोई भी रैंडम डायरेक्शन आप लेंगे, स्कैटरिंग हर डायरेक्शन में होगी. सो दिस इज योर रेले, दिस इज ऑल्सो स्कैटरिंग, scattered. This is Raman scattering. So like this. So इस तरह से ये जो डिफरेंस है, this corresponds to the change in the vibrational energy level. ठीक है. So what we had here is this. So the change in the difference between the two is giving you the vibration, change in vibrational energy level, the change in frequency, vibrational frequency. So from a quantum mechanical viewpoint,
we now know the ground electronic state, and you have vibrational states associated with the electronic state. You also have excited state, electronic system, then there is vibrational state associated with that. So suppose this one is your vibrational level, V is equal to 0, V is equal to 1, 3. So, and this one is the V prime, like that, 1, V prime. ठीक है, सो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट, और उसके साथ उसके वाइब्रेशनल लेवल्स. कल ही हमने बताया हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के साथ वी हैव. मेरी आवाज, माइक तो ऑन है. अच्छा, ओके. ओके, सो दिस इज, so from classical viewpoint we understood it in terms of inelastic collision of photon with the molecule, and inelastic means that the scattered photon has change in energy, and that change in energy corresponds to the energy level of vibrational states within the molecule. ओके, सो यही चीज़ हमने यहाँ पे बताई आपको कि ये जो लेज़र की फ्रिक्वेंसी है और जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी व एमिटेड लाइट का, इसके बीच जो डिफरेंस हम लेंगे, सो यू विल बी एबल टू सी द, यू विल गेट द चेंज इन एनर्जी विच करस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन वाइब्रेशनल स्टेट. ठीक है, तो ये दोनों के डिफरेंस से कैलकुलेट करके हमें मिल जाता है. दिस इज व्हाट वी कैलकुलेट. Raman, we call it Raman shift. We also call it the Raman shift, and this shift is the vibrational energy, change delta E vibrational. So vibrational energy की change के ऊपर ये depend कर रहा है. So this is what we observe the change. और ये जो स्क्रीन से आपके बाहर जा रहा है, यही मैंने आपको बताया था कि ये 10⁻⁷ है. अगर आप एक स्केल डिफाइन करते हैं वाई एक्सिस पे, देन इट विल बी वेरी वेरी हाई, बहुत, और ये छोटा सा डॉट की तरह दिखेगा. तो इसीलिए इसको यहाँ पे ग्राफ में ब्रेक दिया हुआ है. इट इज़ हाईली इंटेंस. इट इज़ द रेले स्कैटरिंग दैट वी वर ऑब्जर्विंग हियर, एंड दिस इज द रमन स्कैटरिंग दैट इज, ये वाला रेले था जो कि काफ़ी इंटेंस है. उसके कंपैरिजन में यहाँ पे छोटा सा चेंज इन very feeble intensity will be observed for the change color. और इसके डिफरेंस से आपको एनर्जी लेवल का आइडिया मिल जाता है कि जो एनर्जी स्पेसिंग है विद इन द वाइब्रेशनल स्टेट्स इन द मॉलिक्यूल, वो आपको पता चल जाता है. So from that was the classical viewpoint. The quantum mechanical viewpoint tells is like this. We understand the first, we have excited state here, first excited state, and this, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल से V प्राइम 0, V प्राइम 1, V प्राइम 2, V 3, and so this is one is V 0, V 1, V 2, V 3. So इस तरह से सारी लाइंस आपको दिख रही हैं ऊपर जो. So this is associated with the first, I mean the ground state. So these are the events that can happen. So पहली चीज, आप जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टू इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट अगर जाता है, दिस इज योर एब्जॉर्प्शन फिनोमेना. So these are the real energy states as per the calculations that we obtained. If the molecule comes down to the lowest vibrational state of first excited state and then comes to the electronic ground state by emitting light, this is called fluorescence. And what is happening here in case of Raman, in case of Rayleigh scattering and Raman scattering,
the light which is falling on the sample doesn't match any of the energy levels. So we say that it is excited to a virtual state, just somewhere in between. Virtual states, they are not quantized. So you do not have to, so these are not real states. तो अगर वो कोई एनर्जी चेंज नहीं हुई और ये वर्चुअल स्टेट में जाने के बाद वापस उसी स्टेट में आ गया, द सेम, इट इज कमिंग बैक टू द सेम वाइब्रेशनल स्टेट of the first ground electronic ground state, then it is Rayleigh scattering or elastic scattering. If the molecule absorbs, you are providing a green laser which is doesn't matching the energy of for the excitation, electronic excitation, to the first excited electronic state, then it is somewhere excited to a virtual state here, और यहाँ से फिर वो वापस आता है. वापस आने में इनिशियली स्टार्ट हुआ तो v जीरो पे था, और जब फाइनली वापस आ रहा है तो ये v इक्वल टू 1 पे रुक जा रहा है. So overall what you see is that overall there is excitation from v0 to v1 in the entire event. ऐसा भी हो सकता है कि if it starts from a v equal to 1, goes to the, it absorbs that green light from the laser and excited to the virtual level, the virtual state, which is unquantized state as I told you, and then when it comes back to the ground state, it comes to the v is equal to 0 state. So there is de-excitation of the, so v is 1 to v0, and here what you are observing, here the change is v is equal to 0 to v is equal to 1. So this is excitation. There is increase in vibrational energy. Here there is a slight decrease in vibrational energy. So on the spectrum, इसको आप दोनों तरफ देखेंगे, बीच में लेजर का, लाइट का अपना जो ग्रीन लेजर है उसका अपना इंटेंसिटी, एक में जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी घट गई है, रेड कलर का दिख रहा है. देखिए कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो ड्राइंग है, इट हैज बीन, दिस इज अ साइंटिफिक ड्राइंग, and you can see that when the energy of the scattered photon has decreased, the color of arrow is red, which indicates lower energy. When the frequency of the scattered light has increased, it is shown by the blue color, that is also, that corresponds to decrease in the vibrational energy of the system, that is v1 से v0 में आ गया. तो ये दो तरह का रामन स्कैटरिंग हुआ. These two are the different types of Raman scattering that we are talking about. One is Stokes and anti-Stokes. So that is what we, so Raman scattering, which is now in two parts. The photon's energy may decrease or photon's energy may increase depending on whether the, when it, while returning to the electronic ground state, it falls to lower vibrational level और दी हायर वाइब्रेशनल लेवल. सो पहले वाले केस में v0 से स्टार्ट हुआ, ये ग्रीन वाला ऊपर तक गया, देखा आपने वर्चुअल स्टेट तक, और जब वापस आ रहा है तो v1 पे अटक गया. सो देयर इज ओवरऑल चेंज इन द एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वाइब्रेशनल एनर्जी. और यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है. जब दूसरे पिक्चर में हम यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रीन लाइट का जो एरो है, ग्रीन एरो, इट स्टार्ट्स एट v इक्वल टू 1. सो द मॉलिक्यूल इज इन v इक्वल टू 1 state, vibration state of the electronic ground state. Now it is excited to some virtual state, and from there when it tries to come back to the ground state, it is it falls to the v is equal to 0 state. So matlab there is decrease in the overall energy of the vibrational state, vibration of the molecule. So this is what we know as Raman scattering. And this phenomena, it is utilized to deduce the information about the molecular vibrations. ठीक है, we will continue tomorrow again with this at the same time.